हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन के एक्सप्लेनेशन और कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पैरा है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ से लेकर के ऑन विच डे कैन फीड। पैरा फर्स्ट है, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम The lesson The Secret of Health, Success and Power written by James Allen. Context: in these lines, James Allen tells us the foundation of health, success and power. Explanation: James Allen says that a man who is full of strong confidence and complete purity will always remain healthy. He will be successful in life. Such a man will get rid of weakness and remain powerful. नेक्स्ट है पैरा, इफ़ यू आर गिवन टू एंगर से लेकर के डिसीज इन योर माइंड। पैरा थर्ड, रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट: द राइटर एक्सप्रेसेस वैल्यूएबल सजेशन ऑन हाउ टू बी हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। इन दीज लाइन्स ही पॉइंट आउट cases of ill health. Explanation: in these lines the writer says that for perfect health of the body, mind must be kept in a peaceful atmosphere. It should not be allowed to be disturbed by such harmful feelings as anger, worry, jealousy and greed. A person who is often angry, worried, jealous or greedy cannot be healthy. If he desires to be healthy, he is desiring something that cannot be true. The reason is that anger, worry, jealousy and greed are the causes of physical ill health. थर्ड स्टेंजा है, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे से लेकर के इनवाइट ए ब्रेक डाउन। पैरा फिफ्थ, रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट: मैनी पीपल रिपोर्ट दैट दे हैव बीन badly tired due to too much of work. Here the author tells them the cause of the undue fatigue and the way to avoid it. Explanation: many people say that they are badly tired due to overwork, but James Allen says that this breakdown is not the result of overwork. It is a result of the wastage of energy that people do in a thoughtless way. If people learn to work in a smooth way, they will not get tired and will remain fresh and healthy. नेक्स्ट स्टेंजा है, स्ट्राइव ओ रीडर से लेकर के सुपीरियर टू सफरिंग। पैरा सिक्स, रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट: इन दी लाइन्स द ऑथर एम्प्रेसेस अपॉन द वैल्यू ऑफ फैथ इन लाइफ। Explanation: in these lines the writer tells his readers that firm faith is a very valuable thing in life. It provides us happiness, it brings about success for us, it provides us peace of mind and power of soul. If we have firm faith in divine, if we have deep and guiding faith in our own inward light, if we have a living faith that our sincere attempts will provide us positive result, we will rise to great height in life and there will no suffering in our life. स्टेंजा फिफ्थ, बिल्ड अपॉन सच ए faith से लेकर के ऑफ विच इज डस्ट। पैरा सिक्स, रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट: इन दी लाइन्स द राइटर इज टेलिंग अस दैट फॉर ट्रू success in life we must have faith in our own inner self and divine inspiration. Explanation: the writer says that if we have matchless faith and self-confidence, every difficulty will disappear. Such a strong faith will certainly fill us with a confidence and firmness which will never give way. If such a foundation of faith is created in life, we can build anything upon such faith. Such thing will be permanent, it will be superior to all the worldly possessions. नेक्स्ट है, कल्टिवेट देन दिस प्योर से लेकर के
greatness and power. Para 9 है important है, reference same है. Context in the lines the author gives us the secret of health, success, greatness and power. Explanation: the author advises us that if we wish to get good health, permanent success, greatness and power, we should make our spirit pure and selfless. We must develop faith in our capacity. We must have one and well-determined purpose before us. This much of preparation will surely make us healthy, successful and powerful. Para 7 लर्न बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस से लेकर के आर्गूमेंट नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सप्रेशन. पैरा 10 रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट इन दी लाइन्स द ऑथर एडवाइसेस अस टू यूटिलाइज अवर एनर्जी विदाउट wasting it in a foolish way. Explanation: the author advises us to plan out our aim. We should then focus our full resources on this one point. We should rather acquire a good skill of doing so. This is the right way to success. The foolish people miss their right aim. They waste their mental and spiritual energy in a foolish way. They talk and argue too much and to do little. They scatter their energy in all the direction and miss the right target, so they fail and never get success. Para 8 he is the man of power से लेकर के calm and unmoved. Para 11 reference same है. Context in the lines the writer describes the man of power. Explanation: the writer says that calm and firmness are the real qualities of a powerful man. In all circumstances, such person remains calm and unmoved. He is not ruled by the strong feeling. He does not give up his aim due to difficulty and hardship. Even when all his companions leave him under the pressure of passion, he sticks alone to his aim. He is not disturbed. He remains balanced and firm. He stays immobile like a mountain or an oak tree. नेक्स्ट स्टेंजा है. पैसन इज नॉट पावर से लेकर के अनमूव्ड थ्रू इट ऑल. पैरा 19 रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट इन दिस लाइन्स द राइटर वार्न्स अस दैट वी शुड नॉट मिस्टेक पैसन ऑफ पावर. Explanation: in these lines the writer says that in anger we feel that we have great power. In reality it is not power. By becoming a prey to passion we waste our energy. The writer compares passion to a strong storm. The storm beats upon a strong and immovable rock in vain. True power is compared to the strong and firm rock itself. Power, like the rock, always remain calm and steady. Let us not mistake passion for true power. Para 10 above all of be of single aim से लेकर के but slow to back. Para 15 reference same है. Context in these lines the author clears that firmness of aim leads us to success. Should be rightly chosen. It should not be a useless aim. After it we should get fully busy to work for it. Let there be no disturbance in our work. We should not forget our fixed aim for other unimportant targets. If you confuse your one aim for other useless aim, you will go into wrong direction. Always try to know new things. It will help you in being successful, but never demand on others. It will reduce you to a beggar. Be a hopeful worker but never a beggar. Para 11 your success, your failure, your influence, your whole life से लेकर के with the cloth of peace. Para 8 है. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट इन द लाइन्स द ऑथर एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन योर सक्सेस एंड अदर मेरिट्स फॉर एवर. Explanation: if you have strong and good thoughts, you will make your future happy with success.
You will develop a dominant and influential personality. These virtues will make you happy. These will save you from failure. You should keep yourself lively, free from shameful acts, and keep healthy ideas in your mind. It will make you full of blessings and joy. You will find peace all about you. Comprehension question on passage. द सूनर बी रियलाइज एंड एक्नॉलेज से लेकर के हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। पैरा सेकेंड इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट डू बी रियलाइज एंड एक्नॉलेज। आंसर बी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ वर सिन। सेकेंड टू whom does disease come? Answer disease come to those person who attract it. Question third, from whom does it run away? Answer it disease run away from those person who powerful, pure and positive thoughts create life-giving ideas. Question, what is meant by the expression positive thought sphere? Answer, positive thought sphere means to feel strong, happy and pleasant thought in mind. Feel that your strong and good thoughts will repel the coming disease from you. Question, what are known to be seeds of disease according to the writer? Answer, according to the writer, the seed of disease are anger, worry, jealousy, greed, etc. Question, what is the secret of health according to the wise man? Answer, the secret of health according to the wise man is to remain free from anger, worry, jealousy, greed and to remain busy with strong, pure and positive thoughts. Question 7. What is meant by the expression a bad drain or an infected house? Answer, bad drain means filthy things. Infected house means dirty place or of living. नेक्स्ट पैरा है इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जिलसी से लेकर के और एन इन्फेक्टेड हाउस। पैरा थर्ड है। क्वेश्चन, नेम द 4 इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड मेंशन इन द पैसेज। आंसर, द 4 इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड मेंशन इन द पैसेज आर एंगर, वरी, जिलसी एंड ग्रीड। Question second, what is impossible that you are expecting? Answer, remaining continually worried, angry, jealous and or greedy and at the same time expecting good health is impossible. Question, what does the author mean by continually sowing the seeds of disease in your mind? Answer, the author means to say through this phrase that if we continually remain angry, worried, jealous or greedy, we shall surely catch some disease. Question, who is a wise man? Answer, a wise man is the man who keeps his mind free from the evils like anger, worry, jealousy or greed and so enjoy good health. Question, what does the wise man know? Answer, a wise man knows that evils like anger, worry, jealousy and greed are far more dangerous to us than a bad drain or an infected house. नेक्स्ट स्टेंजा है इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल से लेकर के देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस। पैरा 4 से लिया गया है। क्वेश्चन है व्हेन शैल बी एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी। आंसर, बी शैल एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम फिजिकल पेन्स। क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डू टू एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी। Answer, we should put our mind in order to enjoy perfect physical harmony. Question third, what should we think? Answer, we should think joyful and loving thoughts. Question fourth, what should we give up?
Answer B, should give up jealousy, our doubt, our worries and hatred. Question 5. What will be its result? Answer, its result will be that we shall be free from indigestion, nervousness and pains in joint. नेक्स्ट स्टेंजा है पुट अवे योर जीलसी से लेकर के लो विद सिकनेस, पैरा 4 से लिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिसीज यू आर लाइकली टू कैच इफ़ यू रिमेन बिजी इन जीलसी, सस्पिशंस, वरीज, हैट्रेड एंड सेल्फ इंडल्जेंसीज। Answer, if we are given to jealousies, suspicions, worries, hatred and self-indulgences, we are likely to catch disease such as dyspepsia, biliousness, nervousness and aching joints. Question second, write down the debilitating habits of mind referred to in this passage. Answer, these debilitating habits of mind are jealousies, suspicions, worries, hatred and self-indulgence. Question third, what is the effect of your bad mental condition on your physical health? Answer, our bad mental condition destroy our physical health with many diseases like dyspepsia, biliousness, nervousness and aching joints. Question 4, what is the disease mentioned here is related to our bones? Answer, the disease that is related to our bones and is mentioned here is aching joints. Question 5, which of these diseases upset our stomach? Answer, the disease that upset our stomach are dyspepsia and biliousness. नेक्स्ट स्टेंजा है मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन से लेकर के अदर क्विकली फॉर फीट्स, पैरा 5 से लिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन? आंसर, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव लॉस्ट देयर हेल्थ बाय ओवर वर्क। Question second, what is the cause of breakdown? Answer, the cause of breakdown ill health is foolishly wasted energy. Question third, what should we do to secure health? Answer, we should learn to work without worry to secure health. Question fourth, who will keep his health? Answer, the man who is free from anxiety and worry and keeps in mind the work to do will keep his health. Question 5, what is useful and health giving? Answer, work is useful and health giving. Para 6, true health and true success to go together से लेकर के if you would stand and not fall, para 6 से लिया गया है। Question, why do true health and true success go together? Answer, true health and true success go together because they are connected with each other in the field of thoughts. Question second, how is every permanent work completed? Answer, every permanent work is completed by the power of faith. Question third, what is supreme? Answer, faith is supreme. Question, in what should we have faith? Answer, we should have faith in our power to complete our work. पैरा नेक्स्ट है योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस से लेकर के विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, पैरा 8 से लिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑन व्हाट डज आवर होल लाइफ डिपेंड? आंसर, आवर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन पावरफुल ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स because our thoughts are the determining factors of our fate. Question second, what should we give up? Answer, we should give up hateful, bad and unhappy thoughts. Question third, what will be the result of giving up hatred and bad thoughts? Answer,
The result of giving up hatred and bad thoughts will be that we shall not be the victims of curses. Question 4th. What will make or destroy our life? Answer. Every moment will make or destroy our life. नेक्स्ट है वाट एवर योर टास्क मे बी से लेकर के वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस पैरा 10 से लिया गया है. क्वेश्चन ऑन वाट शुड बी कंसंट्रेट अवर माइंड. आंसर बी शुड कंसंट्रेट अवर माइंड ऑन अवर टास्क. क्वेश्चन वेयर डू स्मॉल वर्क्स लीड अस. आंसर स्मॉल वर्क्स लीड अस टू लार्जर टास्क. क्वेश्चन व्हाट शुड बी डू नॉट टू फॉल. Answer. Not to fall, we should go ahead to make progress. Question. Where is the secret of true power found? Answer. The secret of true power is found in our task. Question. What do the foolish people do? Answer. The foolish people waste their mental and spiritual energy in the task of foolishness. नेक्स्ट इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग से लेकर के काम एंड अनमूव्ड पैरा 11 से लिया गया है. क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट मस्ट वी डू टू गेट ओवरकमिंग पावर. आंसर बी मस्ट कल्टिवेट मेंटल पीस टू गेट ओवरकमिंग पावर. क्वेश्चन हु स्पीक टू अस अबाउट अवर पावर. आंसर द माउंटेन द ह्यूज रॉक एंड ओक ट्री स्पीक to us about our power. Question third. What are the symbol of weakness? Answer. The symbol of weakness are branches of the trees and weaving reeds. Question fourth. What does a powerful man do when he is in trouble? Answer. A powerful man remains calm and firm when he is in trouble. नेक्स्ट स्टेंजा ही ओनली इज फिटेड इज टू कमांड एंड कंट्रोल से लेकर के विच इनगुल्फ मैनकाइंड इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन है हु इज फिट टू कमांड एंड कंट्रोल. आंसर वन हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल. सेकंड क्वेश्चन है हु नीड टू बी सपोर्टेड एंड वाई. आंसर द हिस्टेरिकल द फियरफुल द थॉटलेस एंड फ्राइवोलस पीपल नीड सपोर्ट बिकॉज दे विल फॉल बैक विदाउट सपोर्ट. क्वेश्चन थर्ड हु नीड टू सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिजर्ट एंड माउंटेन टॉप. Answer the fearless and thoughtful and grave people need to seek the solitude of the forest because the difficult challenges develop their power more and more. Question who can liberate mankind from serious problems of life. Answer those who are calm, fearless, thoughtful and grave can liberate mankind from serious problem of life. नेक्स्ट है above of all be of a single aim से लेकर के purpose of life पैरा 15 से लिया गया है. क्वेश्चन how many aims should a man have. आंसर a man should have only one aim. Question second what type of purpose should a man have. Answer a man should have a legitimate and useful purpose. Question third who is unstable in all his ways. Answer the double minded man is unstable in all his ways. Question fourth what should one follow to achieve victory after victory. Answer one should follow the inward guide the infallible voice of to achieve victory after victory. Question fifth what will reveal to you the essential beauty and purpose of life. Answer your ever broadening outlook will reveal to you the essential beauty and purpose of life.
नेक्स्ट स्टेंजा है कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट से लेकर के ग्रेटनेस एंड पावर। क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी कल्टिवेट, आंसर बी मस्ट कल्टिवेट प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। क्वेश्चन व्हाट इज नेसेसरी फॉर आवर पर्पस, आंसर सिंगलनेस इज नेसेसरी फॉर आवर पर्पस। क्वेश्चन थर्ड वेयर डू सक्सेस हेल्थ एंड पावर लिव, आंसर सक्सेस हेल्थ एंड पावर लिव along with pure and unselfish spirit, purity and faith and singleness of purpose। स्टेंजा ही ओनली इज फिटेड टू कमांड्स एंड कंट्रोल से लेकर के लेट सच सीक द सॉलिट्यूड। क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ मैन इज फिट टू कमांड एंड कंट्रोल, आंसर ओनली दैट मैन इज फिट टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिज वन सेल्फ। क्वेश्चन सेकंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल फॉल, आंसर द hysterical, the fearful and the thoughtless and frivolous will fall। Question third why will the pupil fall, answer the pupil will fall because they feel weak and do not seek company or support। Question what type of pupil gets success, answer the pupil who are calm, fearless, thoughtful and grave get success। नेक्स्ट स्टेंजा है पैसन इज नॉट पावर से लेकर के थ्रू इट ऑल, पैरा 13 से लिया गया है। क्वेश्चन व्हाट इज द मिस यूज ऑफ पावर, आंसर टू वर्क अंडर पैसन इज द मिस यूज ऑफ पावर। क्वेश्चन सेकंड व्हाट इज पैसन कंपेयर टू, आंसर पैसन इज कंपेयर्ड टू ए फ्यूरियस स्टॉर्म। क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज पावर कंपेयर टू, answer power is compared to an embattled rock which remains firm against the furious storm। Question 4 what remains silent and unmoved, answer an embattled rock that is a powerful man remains silent and unmoved। next है if you have नॉट दिस पावर से लेकर के और वैल्यूएबल एनर्जी, पैरा 14 से लिया गया है। क्वेश्चन हाउ कैन बी गेट पावर, आंसर बी कैन गेट पावर बाय प्रैक्टिस। क्वेश्चन व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ पावर, आंसर बिगनिंग ऑफ पावर इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। क्वेश्चन व्हाट शुड बी ओवरकम, आंसर बी शुड ओवरकम दोज पर्पसलेस ट्राइवियलिटीज विच मेक अस देयर विक्टिम। क्वेश्चन what things must be put on one side, answer much waste of our energy must be put on one side। thanks, best of luck।